Welcome back to FPL Bloody Hell. Disappointing game week 28 in the end, the double of the season. Luton players in the end delivered, Bournemouth players in the end delivered. Morris aside, and maybe everyone's safe pick. I think Solanke got a goal in the end. But big shout out to Semenyo punters, good differential. Blank 29, only four fixtures. Team is missing out because of the FA Cup. Captaincy choices. Free hit, not to free hit, biggest question. Depends on how many chips you have left for the season. Wildcard 31, maybe. Free hit 34, free hit 37. Lots to think about. So let's get into this episode right now. नेटो इन गोल गेब्रियल ब्रैडली डॉटी तो डॉटी को तो मैं लेके आया था यहाँ पे वर्कड आउट इन दी एंड ठीक है -4 हालांड टू मॉरिस मैंने कैलकुलेट इतने ही किया कि वर्स्ट केस हिट के अलावा वाइल्ड कार्ड में तो वापस हालांड को लाना ही है ठीक है तो पास्कल ग्रोस का यही चक्कर है यार गाइस इट्स थर्ड हॉल ऑन द बेंच फॉर मी बट इफ आई हैड टू चूज अगेन आई डोंट थिंक आई कुड bench Watkins or I would probably bench Foden even so as much as it hurts I'm okay with the gross 8 pointer I mean not okay with it, it is what it is right. तो यहाँ पे लाइक ए सेट ठीक ही साथ जा रहा था आई थिंक जब राई ने गोल मारा आई थिंक दैट 8 पॉइंटर ऑफ द बॉर्नमouth डिफेंडर ने प्रिटी मच मेरा गेम बिग डिलीट कर दिया वरना आई वाज इन अ स्मॉल ग्रीन एरो 80,000 ठीक है आई वाज ऑन 83 बिफोर द गेम बिग स्टार्टेड तो 83 से 80 हुआ ठीक था अब वापस 95 हो गया आई थिंक लास्ट 5 वीक्स से गेम वीक 25 26 27 24 वीक्स से आई जस्ट बिन एट 90 75 80 90 तो इफ़ आई वांट टू मेक नाउ गेन्स इन द लास्ट 10 गेम वीक्स ऑफ द सीजन थोड़ा अभी पिकअप करना पड़ेगा थोड़ा शायद डिफरेंशियल खेलना पड़ेगा बट लेट्स सी अभी के लिए ये तो मेरा टीम है Eon Taylor Doughty that's 4 players Son that's 5 Bowen 6 Morris 7 Watkins 8 -4 I'll be on 10 players so very unlikely that I'm going to free hit right मेरे ख्याल से मैं एक दो प्लेयर को मिस करूंगा फॉर एग्जांपल ग्रॉस के बदले मैडिसन लाया टोनी को लाया सोलंकी के बदले आई एम मिसिंग टॉटनम डिफेंडर शायद आई एम मिसिंग अनदर अटैकर इन देयर ठीक है शायद आई एम मिसिंग अनदर अटैकर इन देयर लाइक आई सेड why not taking the -8 going in for maybe also Bailey so I could be missing on an Aston Villa attacker like Bailey like Douglas Lewis वहाँ पे एक मिस हो सकता है Aston Villa डिफेंडर स्पर्स डिफेंडर शायद मैं कंसिडर कर सकता हूँ फ्री हिट के लिए मे बी रेगियन या टेलर भी नहीं खेलता है ऐसे नहीं कि टेलर के बहुत ही अच्छा फिक्सचर है बट आई फील कि जस्ट अबाउट समटाइम्स यू कैन पास ऑफ विद 10 प्लेयर्स ठीक है सो या अगर ऐसे कुछ आता है कि और दो प्लेयर नहीं खेलेंगे शायद मेरा हैंड फोर्स हो जाएगा टू फ्री हिट बट आई थिंक इफ 10 प्लेयर्स तो -4 इज़ ओके अगर आपके पास 5 प्लेयर है और -8 के बाद भी आपके पास होते हैं जस्ट अबाउट 8 प्लेयर्स तो शायद मैं कंसिडर करूँगा कि मे बी आप फ्री हिट करें अगर आपके पास है तो आई थिंक अगर आपके पास 7 प्लेयर है -4 लेके आप पहुंच सकते हो 9 पे भी मे बी यू कैन जस्ट अबाउट सी आउट द गेम भी रैंक तो गिरेगा मेरा भी देखो शायद 10 प्लेयर के साथ भी रैंक शायद गिरेगा मे बी होपफुली डिफरेंशियल कैप्टन थोड़ा पिक करके या मे बी कैप्टन पिक सक्सेसफुल होकर वहाँ पे चेंज हो सकता है मेरे लिए राइट तो आज शो द ट्रांसफर्स पोटेंशियली सोलांके टोनी तो एक बहुत पॉपुलर है ग्रोस्ट मेडिसिन ब्रैडली टू पेड्रो पोरो हो सकता है या उडोगी हो सकता है पैसा बचाना हो तो वहाँ पे या यू कैन मेक सम रिस्की ट्रांसफर्स जैसे यू कैन गेट इन प्लेयर्स इफ यू वाइल्ड कार्डिंग इन 31 या 30 में ठीक है तो थोड़ा डेड एंड कर सकते हो वहाँ पे डेड एंडिंग वही टर्म होता है कि आपको मालूम है कि अगर जो आप वाइल्ड कार्ड करने वाले हो तो देन वाई नॉट टेक रिस्क व्हेन यू टेकिंग दोस हिट्स एंड गो इन फॉर हायर सीलिंग प्लेयर्स ठीक है तो आई शो यू पोटेंशियल ट्रांसफर्स इन द नेक्स्ट पेज तो देखो यहाँ पे मैंने टोनी और मेडिसन को लाया है ग्रॉस और सोलांकी के बदले पैसे का तो कुछ इश्यू नहीं है -4 लेके 10 प्लेयर तो आ गए मेरे राइट अभी आई कैन टेक अ -8 तो बहुत लोग हिट्स तो ले रहे हैं एंड आई एम वाइल्ड कार्डिंग इन 30 या 31 लेटेस्ट तो एक ही या चीज़ याद रखना कि नेक्स्ट वीक सिटी आर्सेनल खेलता है एज एन आई डोंट हैव हालांड एंड दैट इज अ बिग वन आई कुड कंसिडर इफ आई डोंट वाइल्ड कार्ड इन 30 तो आई गो वन मोर वीक विदाउट हालांड एंड हालांड कुड बैंग अगेंस्ट सिटी ठीक है टाइटल चैलेंज है बहुत ही बड़ा गेम रहेगा ऑल्दो 2 हफ्ते के बाद है राइट आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक तो वहाँ पे आर्सेनल सिटी आर प्लेइंग आर्सेनल एट होम तो वहाँ पे एडवांटेज सिटी को भी है थोड़ा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद शायद आर्सेनल का मोमेंटम गिर जाए बिकॉज देव कम बैक इन जनवरी इन फॉर्म शायद आफ्टर दिस इंटरनेशनल ब्रेक आर्सेनल को कम बैक विद इंजरीज सिटी को ऑल्सो कम बैक विद इंजरीज गारंटी तो नहीं है
But I would potentially have Gabriel, Saka, Foden, and Haaland वहाँ पे 4 player. Maybe I don't want to wild card in 30. Maybe risk one more without Haaland वहाँ पे. Um, you have Spurs playing Luton, not the worst player, not the worst in 30. Luton playing Spurs और डॉटी मेरे लिए शायद इशू हो सकता है वहाँ पे. ब्रैडली आई डोंट नो, ब्रैडली पॉसिबली बेंच हो सकता है. ट्रेंट कुड बी बैक देन, अदरवाइज ब्राइटन इज अ गुड फिक्सचर. आई कुड पोटेंशियली डू ब्राइटन. Reguilon is playing Man United, could be a tough fixture there, but I'll be stuck with, let's say, Bradley, Gabriel. Again, Taylor को most likely खेलना नहीं है, but against Chelsea away, so there is a dodgy defense अगर जो मैं वाइल्ड कार्ड नहीं करता हूँ. जो वन फ्री ट्रांसफर यहाँ पे यूज़ करूँगा. फिर आई हैव साका, फोर्डन प्लेइंग ईच अदर, गेब्रियल, मैडिसन, सॉन अगेंस्ट ल्यूटन कुड बी डिसेंट. मॉरिस अगेन प्ले अगेंस्ट टॉटनहम, नॉट द बेस्ट. टोनी वॉटकिंस, ठीक है, टोनी प्लेइंग यूनाइटेड. तो ये सब सोचना पड़ेगा कि वाइल्ड कार्ड 30 में करोगे, 31 में करोगे, एंड देन टेक हिट्स अकॉर्डिंगली वेयर यूर सेटिंग योर टीम अप इन केस यू डोंट वांट टू वाइल्ड कार्ड इन 30. देन विल बी स्टक विद टू मेनी डट प्लेयर्स विद बैड फिक्सचर्स. तो आई फील दिस इज़ व्हाट आई वुड डू इफ़ मे बी समहाउ मुझे लगता है कि नहीं मेडिसिन या नहीं लेना मुझे, एंड आई लीव ग्रॉस इन, देन आई गो अटेंशली विद सॉन बोविन. I think शायद लियोन बेली नॉट अ बैड ऑप्शन वहाँ पे. यस, दे हैड अ बैड गेम अगेंस्ट स्पर्स, बट वेस्ट हैम अवे, वेस्ट हैम कंसीड किया बर्नली को यार. यस, वेस्ट हैम इज एट होम, बट बेली इज नॉट अ बैड ऑप्शन इधर अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है. इज इट पॉसिबल दैट मैं बोलूँ नहीं मुझे नहीं लग रहा है टोनी अच्छा, डू आई डू फोर्डन? आई थिंक साका को तो नहीं निकालना है. Do I risk taking out Foden against Arsenal and have no City going in next week? Because I don't want to get free transfer Foden back in against Arsenal, right? थोड़ा high risk लेके वहाँ पे करूँगा. Then does Foden become Madison? If I do -8, that's what a team would look like. But I feel as of now, I think Reguilon, Doughty and Taylor not the best pick, but I think that's what I'll go for. Madison, Son, Bowen, or Morris Solanke के बदले Tony and Watkins. What about a free hit draft? What does the free hit draft look like? I think I don't know अगर जो मैं आर्या लोग का गोल से हटाऊंगा कि नहीं, but I don't know. Maybe would I consider taking Martinez there? You could consider Martinez. You could take Flecken also क्योंकि Burnley है वहाँ पे, right? So, like I said, it's Burnley at home. Could you consider taking Flecken? It keeps a clean sheet. Maybe Flecken and Kaminsky to save money. Flecken, Ariola, ठीक है. Free hit में you would get in maybe let's say Digne with a high ceiling या कौन सा. Leave Charlie Taylor here. Doughty you could keep. Reguilon is a hit. I would say I would get in Udogi or Pedro Porro. Let's say you go for Pedro Porro. So my starting defenders could potentially Pedro Porro, Reguilon and Digne. यहाँ पे I would take out Saka. This is a free hit, guys. Don't actually take him out. Madison, Bailey, I don't know, Barkley for now. यहाँ पे डालता हूँ सोलंकी के बदले टोनी. I mean, it's not a bad team and बहुत पैसा रहेगा, but how would you start, right? What would you start here instead? Digne, Reguilon, Pedro Porro. The 3-4-3 रहेगा आपका. तो 4 में you would have Madison, Bailey, Son, Bowen with Barkley on the bench, Tony, Watkins, Morris to start. Yeah, you can have Morris on the bench and Barkley to start. आप यहाँ पे you can also consider कि you probably going for a fourth defender, but I think that is not needed, right? I think a 3-4-3 or a 3-5-2 is a decent enough. जहाँ पे बेंच के आपके पास बाकली या मॉरिस रह सकता है. टेलर के बदले obviously I'm sorry, you can start one defender of Villa, bench the other. यहाँ पे बहुत options आ सकते हैं आपके पास, right? You could start Martinez also. These are decent options for a free hit. You could look at a free hit ऐसे कुछ ऐसा team or combination यहाँ पे where you can have a 3-5-2 like I said, 3-4-3, 4-4-2 I would not really highly recommend. But yeah, I think goal में Flecken is decent because Burnley है फिर भी, although they've been conceding, Brentford that is. I think maybe Flecken slightly just ahead of Martinez या Kaminsky or anybody else. ठीक है. This is what I feel like a good wildcard team, sorry, a free hit team would be like. I don't know if I free hit my team could be something like this. Not sure.
आपको लगता है कि Morris is not going to look well? You also have potentially looking at Nottingham Forest players. So then would you get in Ilanga here? So Ilanga has looked decent. Someone asked me Chris Wood. I don't know, Morris to Chris Wood. Yeah, okay, you can do Morris to Chris Wood, but I think maybe then he would be on my bench and I would probably start Ilanga. Yeah, Ilanga actually बहुत assist provide कर रहा है Wood को. Would be a tough choice. So you could even do this then if you don't want to have three Luton midfielders. But yeah, you can then choose कि अगर Doughty को भी start करना है कि नहीं. You can start two Villa, or I would not recommend that though, right? I would probably go for like a Digne, Reguilon, Pedro Porro, फिर भी Madison, Bailey, Langa, Son, Bowen, और टोनी वॉटकिंस मॉरिस या क्रिस वुड यहाँ पे. So that's where I would be at. ठीक है, that's what I think. Captaincy. Now I'm just resetting for the sake of argument यहाँ पे. I think captaincy is between Son. Differential in Spurs would be Madison. Obviously Tony आता है against Burnley. Tony इतना प्लोरिफिक तो नहीं रहा है, sorry. But I feel Tony को you cannot not consider. I feel Son, Tony, Watkins, Arsenal Villa थोड़ा hurt कर रहा होगा after that loss. They'll want to bounce back. I think that's my captaincy pick for this week, mainly. Uh, I think Watkins is hungry to score after the last game. I feel Tony का भी itch कर रहा होगा. Burnley defensively not the best either. ठीक है वहाँ पे. And Son does look prolific again. I don't know I'm using that word. Prolific. But looked inevitable last week. Yes, going down to 10 men तो अलग ही था against Villa. But I feel like that's what हो सकता है यहाँ पे. I think Son number 1, Tony number 2, Watkins and Madison number 3 captaincy picks for me. Bowen, I'm just not too sure. Looked good against Burnley, but यार थोड़ा doubt लग रहा था थोड़ा. तो I think maybe if he's got a little bit of a niggle or slight dip, I don't know अगर जो मुझे रिस्क करना होगा to get in Bowen captain versus Villa. वो था हमारा एपिसोड. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू गेम वीक 29 free hit draft and potential picks. Obviously we'll have team news coming out later and we'll try doing a deadline stream to let you know what I'm doing, free hitting or not, or just taking a -4. Thank you again so much for tuning in. Do leave your feedback. Season's going decently, started off very poorly, but hopefully I can get to the 10K mark by the end of the season. Best of luck to you and hopefully have a good one.